Dear CAT aspirants, and welcome to this session of FanCATstic5 Friday 5 p.m. And today we will be solving CAT 2021 Slot-2 paper. And in Slot-2, typically we'll talk about how much time we should give for those 8 questions are concerned on para summary, para jumbles, and odd sentence para jumble, and what time should we devote to those questions on reading comprehension. When I'm talking about reading comprehension, what were those clues and what strategy of mind it needed so as to ensure that you are going on the right track, whether going through the question paper did solve some concern or not, and what was going on in the student mind while solving that paper. ये सारी चीजें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं आज जब हम इस पेपर को सॉल्व करने वाले हैं. So let's start the session. So let's start with question number 1. So when I talk about this question, again para summary question, and इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना था, क्या चीजें ध्यान में रखनी थी, और जैसा कि मैंने बताया कि how we need to eliminate the options. Let's start. The unlikely alliance of the incumbent industrialist. So first of all, we are talking about the alliance of whom? Incumbent industrialist. The student will ask the question, so what do you mean by the word incumbent? So incumbent industrialist matlab the current industrialist. You might have heard anti-incumbency. एंटी-इंक्यूबेंसी क्या होता है? द करंट जो सिस्टम चल रहा है उसको हटाने के लिए जो हम करते हैं, दैट इज एंटी-इंक्यूबेंसी. आपने पॉलिटिकल अगर न्यूज़पेपर या पॉलिटिकल आर्टिकल्स के अंदर ये वर्ड सुना होगा. सो द अनलाइकली, वो अलायंस जो कि अनलाइकली है, किसमें? Incumbent industrialist में, and distressed unemployed worker is especially powerful amid the debris of corporate bankruptcies and layoff. वो कह रहा है इस time when we are talking about a corporate bankruptcies, the way corporate are going bankrupt and the layoffs which are happening of employees. So between both these people, it's very important that though the alliance is unlikely, but it's even more important. In an economic downturn, the capitalist, now why it is important? The capitalist, when I'm talking about industrialists, those who are into the business, is more likely to focus on cost of the competition emanating from free market. Emanating का मतलब होता है emerging. The word emanating means emerging from free markets than on the opportunity they create. So they will be focusing more on competition, less on opportunities they are creating, which is one part of capitalists to create opportunities. They will be more focused on creating or on ensuring that they are in competition rather than creating opportunities. And the unemployed worker will find many others in a similar condition. और unemployed worker जो है वो काफी लोग होंगे जो कि similar condition को face कर रहे होंगे, and with anxiety similar to this, which will make it easier for them. Now because of this, because there are many workers who are into the same kind of a situation, the same anxiety, it will make it easier for them to organize together. So the workers will come together, the capitalists will come together, or ensuring that they are in competition. Now using the cover and the political organization provided by the distressed. Now distressed कौन थे? Employers, I mean employees. ये लोग जो कवर देंगे और जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ये लोग क्रिएट करेंगे, सब लोग साथ मिलके कैपिटलिस्ट कैप्चर करेंगे पॉलिटिकल एजेंडा, एंड दैट विल बी द एजेंडा व्हिच विल बी कैप्चर्ड बाय द पॉलिटिक्स. व्हाट एजेंडा? ये जो डिस्ट्रेस्ड वर्कर हैं, जब ये लोग एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे, इसको ये लोग कैप्चर करेंगे, इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाएंगे, एंड दैट्स हाउ दे विल रिमेन इन कॉम्पिटिशन. नाउ यू हैव टू समराइज. आपको मैं हमेशा बोल चुका हूं, आपने अगर मेरे Ekoching के अंदर वीडियोस सुने होंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस, एंड व्हेन दोज हु आर अटेंडिंग माय लाइव क्लासेस एज वेल, दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट that you will not give your opinion at all. You will stay detached from the paragraph, and that's how you need to answer the question. Now let's see among the 4 options which is actually summarizing. If I take in the context of CAT 2021, this क्वेश्चन शुड गिव यू +3. मैं आपको सारे क्वेश्चन में बताऊंगा +3 कहां मिलेंगे, -1 कहां मिलेंगे और 0 कहां मिलने चाहिए. -1 मतलब यस अटेम्प्ट होना चाहिए बट गलती हो सकती है, बिल्कुल वी शुड टेक द चांस. 0 का मतलब क्या है?
या तो ऑप्शन नॉन एमसीक्यू टीटा बेस्ड है या फिर शायद मैं उसको छोड़ दूंगा। +3 डेफिनेटली जो करेक्ट होगा, राइट। इन एन इकोनॉमिक डाउनटर्न दिया हुआ है, इकोनॉमिक डाउनटर्न कैपिटलिस्ट दिया हुआ है, यूज द एंजाइटी ऑफ द अनएम्प्लॉयड, तो यूजिंग द कवर एंड द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन and their political organization which is given. So cover, they are talking about anxieties and political organization to set the political agenda to suit their economic interest. So this can be my answer for sure, because if I talk about again, I'll just ensure that you guys do understand it properly. So I'm just highlighting the words economic downturn, capitalist using the anxiety of the unemployed to set the political agenda and suit their economic interest. So that can be my answer for sure. Let's go to option number 2. Option number 2 के अंदर क्या प्रॉब्लम है देखते हैं, या प्रॉब्लम नहीं है क्या, ये आंसर हो सकता है। An economic downturn creates competition. ना वो क्या बोल रहा है, इकोनॉमिक डाउनटर्न की वजह से कंपटीशन क्रिएट होता है। यहां क्या लिखा हुआ था इन्होंने, मोर लाइकली टू फोकस ऑन द कॉस्ट ऑफ कंपटीशन। इकोनॉमिक डाउनटर्न के अंदर वो कंपटीशन में रहेंगे रहने के लिए, और यहां पर क्या लिखा हुआ है, एन इकोनॉमिक डाउनटर्न क्रिएट्स कंपटीशन। नो, इट्स नॉट अबाउट क्रिएटिंग कंपटीशन, इट्स ऑल अबाउट टू रिमेन इन कंपटीशन, बिकॉज ऑफ विच द कैपिटलिस्ट कैप्चर, and this is the reason why capitalists capture the political agenda created by political organization provided by the unemployed. So यहां पर ना तो distressed की बात हो रखी है, ना unemployed workers की स्पेसिफिकली हो रखा है। और फर्स्ट पॉइंट इज अ वेरी मेजर रीजन इज द इकोनॉमिक डाउनटर्न क्रिएटिंग द कॉम्पिटिशन। नो, इकोनॉमिक डाउनटर्न के वक्त क्या हो रहा है, दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। सो सेकंड वोंट बी माय आंसर, सेकंड इज नॉट समराइजिंग इट प्रॉपर्ली, सो सेकंड आई विल एलिमिनेट फॉर श्योर। लेट्स गो टू ऑप्शन नंबर 3, एन अनलाइकली अलायंस, ओके, of the industrialist and unemployed, fine, happens during an economic downturn, okay, in which they come together to unite politically and capture the political agenda. So they unite politically. No, कैपिटलिस्ट जो है वो अपना पॉलिटिकल एजेंडा कैप्चर करने के लिए आ रहे हैं। वेदर दे यूनाइट पॉलिटिकली, अगेन it's an alien option, not in sync with what is given in the paragraph. And fourth option, when we are talking about the purpose of an unlikely alliance, so ये जो unlikely alliance है इसका purpose क्या है, between the industrialist and the unemployed during an economic downturn is to stifle competition in free market. It was only the purpose of capitalist, not of unemployed. So यहां पर वो बोल रहा है दोनों का है, अनएम्प्लॉयड का ये कहीं पर भी रीजन नहीं है, कैपिटलिस्ट का जरूर है, इसलिए फोर्थ ऑप्शन एलिमिनेटेड। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, ऑप्शन नंबर 2 आई एम एलिमिनेटिंग दैट इकोनॉमिक डाउन इज क्रिएटिंग द कंपटीशन वाज ऑलवेज देयर, they just want to remain in the competition. Second, when they are talking about unite politically, no. Third, we are talking about unemployed का purpose ये है ऐसा करना, no. So that's why eliminating second, third and fourth, and I'll go with option number 1 as an answer. Right? So do write in the comment below. I hope you are getting the logic. If you have any question, if you have any other point of view, do let me know for sure. So this is CAT 2021, as I said, a verbal ability questions which I am solving. Okay, let's move to the second question, which was odd sentence para jumble. So if I talk about this particular odd sentence para jumble, a theta based question, if I talk about this particular para jumble, may go wrong. I say may go wrong. अटेम्प्ट करना बिल्कुल बनता है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट ये गलत जा सकता है। बट थोड़ा सा अगर इसको थोड़ा सा एक दो ऑप्शन के अंदर जहां पर कंफ्यूजन थी उसको अगर टैकल कर लिया जाता तो आंसर मिल जाता। लेट्स सी, 5 क्वेश्चन यहां पर इसके अंदर आपको 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं एंड 1 इज ऑड सेंटेंस। लेट्स सी, इट हैज टेकन ऑन अ वार्म इट, व्हाट आई डोंट नो, इट हैज टेकन ऑन अ वार्म fuzzy glow in the advertising world where its potential is being widely discussed and it is being claimed as the undeniable wave of future. So what it is all about, I don't know. Something they are talking about, some it they are talking about, which has a glow in the advertising world. Let's go to sentence 2. There is little enthusiasm for this in the scientific arena. For them, marketing is not a science. So I can say they are talking about marketing. If there is a little enthusiasm for this in the scientific arena, advertising world के अंदर ग्लो कर रहा है,
यहां पर मार्केटिंग इज नॉट फॉर जो लोग साइंटिफिक अरीना के लिए मार्केटिंग हैज नॉट अ साइंस एंड ओनली अ हैंडफुल ऑफ स्टडीज हैव बीन पब्लिश्ड इन साइंटिफिक जर्नल्स, सो दे आर टॉकिंग अबाउट मार्केटिंग. आई कैन से दैट, यस, I can say that they are talking about marketing. Let's go further. The new growing field of neuromarketing. Here we go. Again, we are talking about neuromarketing. The new growing field of neuromarketing attempts to reveal the inner workings of consumer behavior and is an extension of the study of how choices and decisions are made. So, marketing. We are talking about neuromarketing. Let's go further. थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग. Okay. Some see neuromarketing, very good, as an attempt to make the art of advertising into a science being used by a marketing expert to back up their proposal with some form of real data. The marketing gurus, okay, have already started drawing on psychology in developing tests and theories, and advertising people have borrowed the idea of the focus. Now understand. First, we are talking about neuromarketing. हमें समझ में आ रहा है that neuromarketing has taken on a firm, fuzzy glow in the advertising world, where its potential is being widely discussed and being claimed as undeniable wave of future. There is a little enthusiasm for this in the scientific arena. For them, marketing is not science. Why they are talking about? Because we are talking about neuromarketing. Neuro related to science, and we are talking about marketing, and that's why they are talking about inner working of consumer behavior. Some see neuromarketing and attempt to do blah blah blah. Now if you see fifth option is specifically talking about marketing gurus. They have already started drawing on psychology in developing tests and theories. We are not talking about marketing gurus. We were talking about neuromarketing. We were not talking about, developing tests through psychology. We are only talking about in the first four option that what this neuromarketing is all about. If I have to solve this particular para jumble, I would definitely start with my intro sentence, which is third. The new growing field of neuromarketing attempts to reveal the inner working of consumer behavior and is an extension of the study of how choices and decisions are made. That should be third. Now, third के बाद अगर तुम्हें जाना है, there is a little enthusiasm. Some see this is an attempt and out of blah blah blah. Now, अब first अगर option देखोगे, it has taken on a warm fuzzy glow in the advertising world. Now, third is talking about the positive thing. First is also talking about the positive thing, right? अब उसके बाद some see neuromarketing as an attempt to make the art of advertising into a science. कई लोग इसको साइंस में देखना चाहते हैं, बट साइंस के अंदर इसके लिए enthusiasm little है, so it should be ideally 3142, right? Again talking about neuromarketing. neuromarketing के बाद किस तरीके से उसने एडवर्टाइजिंग फील्ड के अंदर गया है, कई लोग इसको इस तरीके से देखते हैं, बट साइंस के अंदर इसका enthusiasm कम है. There is nothing talking about psychology. मार्केटिंग गुरुज क्या सोचते हैं, टेस्ट कैसे सोचा जाता है, इसलिए फिफ्थ ऑप्शन इज माय ऑड सेंटेंस पैरा जंबल, आई मीन ऑड सेंटेंस, राइट? सो दिस इज व्हाट this particular OSPJ was all about. My thing is, you can put 0 if you want, because it's also the anxiety during CAT paper, it's also the timing during CAT paper. We can't solve all, we have to make the choices, so just mark 0 in this particular question. Let's go to para summary again. Creativity is now, we are talking about creativity is now viewed as the engine of economic progress. What is creativity? It's engine of economic progress. We know that. Various organizations are devoted to this study and promotion. There are encyclopedias and handbooks surveying creativity research. But this proliferating success has tend, so yahan, ye word is very important, but however, because author will talk something opposite or argument will talk something opposite after this. So this proliferating success, ये जो success इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, has tended to erode creativity stable identity. जो हम लोग जो creativity की identity थी उसको खत्म कर दिया है इस proliferating success ने. It has become so invested with value that it has become impossible to polish its meaning and the practices that supposedly identified and encourage it. वो बोल रहा है अब ये इतना ज़्यादा इसकी value होने लगी है कि एक्चुअली इसका जो मीनिंग और जो प्रैक्टिस होनी चाहिए थी वो शायद नहीं होती है. Many people in organization committed to producing original thoughts now feel that undue obsession with the idea of creativity gets in the way of real creativity. जो लोग, जो ऑर्गेनाइजेशन
कमिट थे इन प्रोड्यूसिंग द ओरिजिनल आइडियाज, ओरिजिनल क्रिएटिविटी, अब उन्हें ऐसा लिखता है कि ये जो ऑब्सेशन हो गया क्रिएटिविटी की वजह से, इट इज एक्चुअली हिंडरिंग द रियल क्रिएटिविटी. सो दे स्टार्टेड ऑफ विद क्रिएटिविटी इज गुड, बट द ऑब्सेशन विद व्हिच द थिंग्स आर हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, it's actually hindering the real creativity. That's not what I am saying, that's what the passage is saying. We will not get into the opinions, right? Let's go to the answer. You have to summarize it. Creativity has proliferated to the extent that is no longer a stable process and its mutating identity has stifled the creative process. So क्या बोलना चाह रहा है? Creativity has proliferated to the extent, इस extent तक proliferate हो चुकी है, that it's no longer a stable process. ये एक स्टेबल प्रोसेस नहीं रहा है, या हालांकि स्टेबल आइडेंटिटी की बात कर रखी है, एंड इज म्यूटेटिंग आइडेंटिटी, उसकी आइडेंटिटी म्यूटेट हो रही है, चेंज हो रही है, जिस वजह से क्रिएटिव प्रोसेस स्टिफल होता जा रहा है. लेट्स सी, अभी हम इसको एकदम एलिमिनेट नहीं करते हैं, लेट्स सी आगे क्या क्या ऑप्शंस किस तरीके से दिए जाते हैं, देन ओनली विल टेक दैट कॉल. जस्ट आई विल सर्कल ऑप्शन नंबर 1. द इंडस्ट्री दैट हैज बिल्ड अप अराउंड रिसर्चिंग what comprises and encourage creativity has destroyed the creativity process itself. So they're talking about the industry that has built up around researching. No. What comprises and encourages creativity? It's not about that industry जो कि इस पे रिसर्च कर रही है. उस इंडस्ट्री ने कुछ नहीं किया. It's basically the obsession towards creativity. उन इंडस्ट्री का क्या लेना देना है, वो तो सिर्फ रिसर्च कर रहे हैं. सेकेंड ऑप्शन एलिमिनेटेड. थर्ड, the obsession with original thought, how it can be promoted and researched, has made it impossible for the people and organization to define the concept anymore. That's too extreme. इसका मतलब तो ये हो गया, अब कोई क्रिएटिविटी कर ही नहीं सकता. उसने यहां पर क्या बोला था? It is getting in way of real creativity. वो उसके बीच में आ रहा है. इसका मतलब ये नहीं कि हम क्रिएटिविटी कर ही नहीं सकते. My third option eliminated. Let's go to the fourth. The value assigned to creativity today has assumed such proportion that the concept itself has lost its real meaning, and this is hampering the endangered of real creativity. Now between first and fourth, मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूं जहां पर कंफ्यूजन आता है, अब अगर मैं कंफ्यूजन को क्लियर करूं, जस्ट अ मिनट, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ की बात करूं, लेट्स गो टू फर्स्ट एंड लेट्स गो टू फोर्थ. और मैंने मेरे पैरा समरी क्लासेस के अंदर अगर तुम देखोगे, मैंने बोल भी रखा है दैट पैरा समरी के अंदर एक ही प्रॉब्लम आती है कि you get confused or you tend to get confused between incomplete option. अब फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ना तो वैल्यू की बात हो रही, मैं आपको वर्ड्स भी दिखा रहा हूं. सो ना तो उसके अंदर बात कर रहे हैं कि हम लोग जो वैल्यू असाइन कर रहे हैं क्रिएटिविटी के लिए, concept itself has lost its real meaning. So again, concept itself lost its real meaning. It's hampering, it's coming in the way of real creativity. और फर्स्ट के अंदर ये पूरा कहीं पर भी लाइन नहीं दे रखा है, and that's why fourth is a complete option and should be my answer. For this I would definitely suggest +3 because was easy to eliminate the option. So हमने 3 क्वेश्चन किए हैं. फर्स्ट के अंदर पैरा समरी आई सेड +3, पैरा जो सेकंड में ऑफ सेंटेंस पैरा जंबल था आई सेड 0, और इसके अंदर अगेन +3. देयर वर 3 क्वेश्चंस ऑन पैरा समरी, देयर वर 3 क्वेश्चंस ऑन पैरा जंबल एंड 2 क्वेश्चंस ऑन ऑड सेंटेंस पैरा जंबल. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4, अगेन अ पैरा जंबल. बट टुडे, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्ड बट, डोंट एज्यूम दैट बट से स्टार्ट नहीं हो सकता. इसके अंदर होगा या नहीं होगा आई डोंट नो, बट अगर आपको और ऐसे वीडियोस देखने हैं, सो आई हैव स्टार्टेड विद द वेरी बेसिक्स ऑफ पैरा जंबल्स. यू कैन रेफर टू माय दोस रिकॉर्डेड वीडियोस देयर आल्सो, राइट? So parajumbles के अंदर, for those who are watching my video for the first time, I'll just give you an idea because parajumbles is where the major students have problem with. So I have just, so you need to start with the first option, which is introducing your sentence, followed up by second, which is explaining it further, then talking about third, which is extending it further, and then we are talking about fourth option, which is kind of a conclusion. So these are the 4 things which you need to follow. Let's start. But today there is an epochal challenge. When we talk about the word epochal, means a very unique challenge with us, right? To rethink and reconstitute the vision. They are talking about vision and the practice of development. 2 things they are talking about, development and vision, and you need to rethink and reconstitute this as a shared responsibility. And what needs to be reconstituted, that it is not everyone's, it is not only someone's cup of tea, it is a shared responsibility, a sharing which binds both the agent and the audience, the developed world and the developing, in the bond of shared destiny. Fine, good. We are at a crossroad now
in our vision and practice development. So we are talking about vision and practice of development. हम लोग यहां पर विजन और प्रैक्टिस की बात पहले करेंगे, उसके बाद हम चैलेंज की बात करेंगे. आप समझिए, आप भी किसी चीज के चैलेंज के बारे में पहले बोलोगे, उसके बाद इंट्रोडक्शन दोगे? नहीं ना, हम पहले इंट्रोडक्शन देंगे कि हम लोग विजन और प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग जो है इस पे जाएंगे चैलेंज पे. तो डेफिनेटली यहां पर मेरा फर्स्ट तो नहीं होने वाला, यहां पर इंट्रोडक्टरी लाइन मेरी फर्स्ट तो नहीं होने वाली. दिस कॉल फॉर द कल्टीवेशन. व्हाट कॉल्स फॉर द कल्टीवेशन? अगेन मेरा सेकंड भी यहां पर इंट्रोडक्टरी नहीं होने, आई मीन थर्ड भी मेरा यहां पर इंट्रोडक्टरी नहीं होने वाला. जस्ट अ मिनट. या सो इसके अंदर थर्ड भी मेरा यहां पर नहीं होने वाला. सो फॉर श्योर आई एम ओनली लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर 2 and 4. Because why not third? This calls for the cultivation of an appropriate ethical mode of being in our lives, which enable us to realize this global and planetary situation of shared living and responsibility. We are talking about a shared responsibility. We are talking about here कि ये जो चैलेंज है, ये चैलेंज कैसे दूर होगा? This calls for the cultivation of this. So point is मेरा 1-3 शायद पेयर बनेगा. Let's go to fourth. Half a century ago, development began as a hope for better human possibility, but in the last 50 years, this hope has lost itself in the dreary desert of various kind of hegemonic application. Now, the whole idea is between 2 and 4th, which should be my starting line. So, understand the problem. how we are at crossroad now. As of now हम लोग क्रॉस रोड पे हैं. किस पे? हमारा विजन और प्रैक्टिस ऑफ डेवलपमेंट. बिकॉज पॉइंट इज डेवलपमेंट बिगेन. यहां पर क्या लिखा हुआ है? डेवलपमेंट बिगेन. इससे पहले आई नीड टू टॉक अबाउट व्हाट इज दिस विजन एंड डेवलपमेंट इज ऑल अबाउट. Intro is something which is introducing you to the topic. So in these 4 sentences, you need to see that sentence which is giving you the broader picture, which is starting the context of the parajumble, and which is option number 3. Why? I mean option number 2. Why option number 2? The reason is very simple. We are talking about vision and practice development. So 2 is my introductory line for sure. Right? हम लोग इस टाइम क्रॉस रोड पे हैं in our vision and practice of development. ठीक है? इसके बाद हम लोग बोलेंगे कि डेवलपमेंट स्टार्ट कब हुआ. When development started, so it is explaining this. So here I am talking about 2. I'm just writing it here. So I'm writing about 2. उसके बाद we'll go to 4. How it started. How it started के बाद अब हम लोग के पास ऑप्शन है 1 और 3. एंड एज आई सेड 1 and 3 becomes the mandatory pair because 1 के अंदर we are talking about it should be a shared responsibility and the answer is given in 3. So 2, 4, 1, 3 should be the exact sequence of this particular parajumble. Look forward a few decades to an invention which can end the energy crisis, change the global economy and curb climate change at a stroke, a commercial fusion power. वो बोल रहा है आज से कुछ सालों के बाद एक इन्वेंशन जो कि एनर्जी क्राइसिस खत्म कर देगी, ग्लोबल इकोनॉमी को चेंज कर देगी, कर्व कर देगी क्लाइमेट चेंज को एक ही झटके के अंदर. और उसका नाम क्या दिया हुआ इन्होंने? द नेम विच दे हैव गिवन इज कमर्शियल फ्यूजन पावर. फर्स्ट, ओके. टू गेन मीनिंगफुल इंसाइट्स, लॉजिक हैज टू बी accompanied by asking probing questions of nature through controlled test, precise observation and clever analysis. Okay, let's see what this is all about. Third, the greatest of all invention is the Uber invention that has provided the insights on which others depend. And what is that? The modern scientific method. Fourth, this invention is inconceivable without the scientific method, will rest on the application of a diverse range of scientific insights such as the process transforming hydrogen into helium to release huge amounts of energy. So my first intro line, मेरी पहली intro line क्या होगी? So मैंने क्या बोला था? Intro line. Let's see. So my intro line is talking about invention. मेरी इंट्रो लाइन पहली बात करेगी, हमारा पूरा पैसेज, हमारा ये पूरे 4 सेंटेंस, आपको ये समझना यही मेरा पैसेज है. ये किसके बारे में बात कर रहा है? इन्वेंशन के बारे में, विच इज गिवन इन सेंटेंस 3. द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इन्वेंशन इज द उबर इन्वेंशन, राइट? दैट हैज प्रोवाइडेड द इंसाइट्स
on which other depend, और वो insights क्या है? The modern scientific method. ठीक है? ओके, आगे चलते हैं. This invention is inconceivable without scientific method. Now, ये invention इसके बारे में लिखा हुआ है या इसके बारे में लिखा हुआ है? ये invention लिखा हुआ है थर्ड वाले के बारे में. This invention is अभी किस सीक्वेंस में आएगा? लेट्स सी. दिस इन्वेंशन इज फॉर श्योर थर्ड के लिए दिया हुआ है. सेकंड, टू गेन मीनिंगफुल इंसाइट्स, दे आर टॉकिंग अबाउट टू गेन अ मीनिंगफुल इंसाइट्स, लॉजिक हैज टू बी अकम्पनीड बाय आस्किंग प्रोबर क्वेश्चन ऑफ नेचर थ्रू ब्ला ब्ला ब्ला. सो एक चीज मुझे समझ में आ गई है कि हम लोग थर्ड जो है वो स्टार्टिंग लाइन के साथ जा रहे हैं. नाउ आफ्टर थर्ड व्हाट? थर्ड के बाद आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? नाउ आफ्टर थर्ड व्हाट? राइट, लेट्स सी. अब यहां लिखा है हैज प्रोवाइडेड द इंसाइट्स ऑन विच अदर डिपेंड टू गेन मीनिंगफुल इंसाइट्स. सो 3 and 2 becomes my pair. I repeat, 3 and 2 becomes my pair. स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, सर इन्वेंशन के बारे में भी तो दे रखा है, why not 3 के बाद 4, why 2? मैं इसका आंसर दूंगा, why not 3 के बाद 4, why 2? समझो मेरी बात. This invention is inconceivable without the scientific method. अब साइंटिफिक मेथड की हम लोग बात कर रहे हैं. It will rest on the application of a diverse range of scientific insights. इसीलिए हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं. यहां पर हम बात कर रहे हैं कंट्रोल टेस्ट, प्रिसाइज ऑब्जर्वेशन, क्लेवर एनालिसिस, और जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं इसके अंदर एक्सप्लेन कर रहे हैं. क्या है वो? सच एज दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग हाइड्रोजन इनटू हीलियम एंड ब्ला ब्ला स्टफ. इट इज एक्सप्लेनिंग दैट प्रोसेस. It is explaining that probing questions of nature through control test. हम टेस्ट से इस क्वेश्चन को प्रूव कर रहे हैं. सो 2 के बाद इसलिए 4 आएगा. सो इन्वेंशन, इंट्रोडक्शन की बात यहां हो रही है, इसको एक्सटेंड कर रहा है ये, एक्सप्लेन कर रहा है ये, और 2 के बाद आएगा 4 जो उसको फर्दर एक्सटेंड कर रहा है, और 1 सबसे लास्ट में आएगा. कई बार स्टूडेंट फर्स्ट को स्टार्टिंग कर देते हैं. देखो, प्रेजेंट पहले आएगा, फ्यूचर बाद में. प्रेजेंट पहले आएगा, फ्यूचर बाद में. अब वो बोल रहा है लुकिंग फॉरवर्ड अ फ्यू डेकेड्स टू एन इन्वेंशन. पहली बात, लुकिंग फॉरवर्ड अ फ्यू डेकेड्स टू एन इन्वेंशन. इस इन्वेंशन के कई सालों के बाद, किस इन्वेंशन के? जो कि दिया हुआ है तुम्हारे को थर्ड में. सो मेरे ख्याल से यहां पर थर्ड के अंदर और फर्स्ट के अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए था. द होल कंफ्यूजन वाज बिटवीन 2 and 4. इसको संभाल लिया तो लाइफ झिंगा लाला. ठीक है? सो दिस इज व्हाट द पैरा जंबल इज ऑल अबाउट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पैरा समरी ऑन योर स्क्रीन नाउ. ओके, बायोलॉजिस्ट हु पब्लिश देयर रिसर्च डायरेक्टली टू द वेब. सो बायोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं? अपनी रिसर्च डायरेक्टली वेब पे डाल रहे हैं. हैव बीन लेबल्ड एज रॉग, उनको हम रॉग बोल रहे हैं. बट फिजिस्ट हैव बीन रूटीनली पब्लिशिंग रिसर्च डिजिटली, जिसको हम लोग प्रीप्रिंट्स बोल रहे हैं, प्रायर टू सबमिटिंग इन अ पीयर रिव्यूड जर्नल. सो बायोलॉजी वाले क्या कर रहे हैं? ये लोग पूरा अच्छी तरीके से वो क्या बोल रहे हैं? हु पब्लिश देयर रिसर्च डायरेक्टली टू द वेब. ये अपनी फाइनल रिसर्च वेब पे डालते हैं सीधा एकदम. ठीक है? और फिजिस्ट क्या करते हैं? ये प्रीप्रिंट देते रहते हैं. ठीक है? कि वो थोड़ा थोड़ा जो भी उनका रिसर्च हो रहा है वो डिजिटली डालते रहते हैं. एडवोकेट ऑफ द प्रीप्रिंट, जो फिजिस्ट को एडवोकेट कर रहे हैं कि प्रीप्रिंट अच्छा है, वो क्या रीजनिंग दे रहे हैं? वो आर्ग्यू करते हैं कि क्विक एंड ओपन डिसेमिनेशन ऑफ रिसर्च स्पीड अप द साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड अलाउज फॉर वाइडर एक्सेस ऑफ नॉलेज. आप जितना ज्यादा जो काम करते चाह रहे हो उसको अगर आप बताते रहेंगे रादर देन वेटिंग फॉर द फाइनल अप्रूवल, उससे और ज्यादा नॉलेज का डेटाबेस बढ़ता है. बट सम जर्नल्स स्टिल डोंट एक्सेप्ट रिसर्च प्रीवियसली पब्लिश्ड एज प्रीप्रिंट. और कई जर्नल्स अभी भी प्रीप्रिंट रिसर्च को एक्सेप्ट नहीं करते हैं. इवन इफ द आइडिया ऑफ प्रीप्रिंट इज गेनिंग ग्राउंड, हालांकि प्रीप्रिंट पहले सबमिट करने का आइडिया इज गेनिंग गुड ग्राउंड. वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर फॉर बायोलॉजिस्ट इज हाउ दे वुड बी व्यूड बाय मेंबर ऑफ देयर कंजर्वेटिव रिसर्च कम्युनिटी. वो बोल रहे हैं कि बायोलॉजिस्ट का एक ही प्रॉब्लम है कि उनकी बाकी की जो कम्युनिटी है जो कि कंजर्वेटिव है, वो फाइनल चीज कोई बाहर लेके आते हैं. कई बायोलॉजिस्ट जो उसको दिखाना चाहते हैं वो कैसे इस चीज को ओवरकम करें. लेट्स गो टू द ऑप्शंस वन बाय वन. While digital publication of research is gaining popularity in many scientific disciplines, almost all peer-reviewed journals are reluctant to accept papers. किसने बोला? किसने बोला? उसने क्या बोला है? Some journals. उसने क्या बोला? Some journals.
ऑल जर्नल की बात नहीं करी है उसने, और इसी वजह से मेरा ऑप्शन 1 एलिमिनेटेड. आई होप इट इज क्लियर टू यू गाइज. लेट्स गो टू सेकंड. Compared to biologists, physicists are less conservative, okay, in their acceptance of digital pre-publication of research paper, which allows for the faster dissemination of knowledge. ये मेरा आंसर हो सकता है. Second, yeah, second can be my answer for sure. इसको मैं एक बार स्टार मार्क कर देता हूं. Preprints of research are frowned on by some scientific fields as they do not undergo reviewing process. Nowhere in this particular argument हम लोग रिव्यूइंग प्रोसेस के बारे में बात करें. हम लोगों ने कहीं पर भी ऐसी रिव्यूइंग प्रोसेस की बात नहीं करी है, इसलिए मेरा ऑप्शन 3 विल आल्सो बी एलिमिनेटेड. एंड लेट्स गो टू ऑप्शन नंबर 4 which says one of the advantage of digital preprints of research is that they hasten the dissemination process, but these are not accepted by most scientific communities. अब मुझे नहीं पता है कि most scientific community क्या करती है, ये बहुत broad है ऑप्शन में. कुछ एक्सेप्ट नहीं करती हैं, लाइक बायोलॉजिस्ट इज ओके. मोस्ट साइंटिफिक कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करती है, मुझे नहीं पता है, इसलिए आई एलिमिनेट ऑप्शन नंबर 4 एज वेल. आई गो विद ऑप्शन नंबर 2 एज द राइट आंसर. I hope it is clear to you guys, and I request everyone to please, after going through this video, do share with me the feedback, what kind of questions you are looking forward for, or it is even helpful for you guys or not, even if you are watching these videos. Let's move to the next odd sentence parajumbles, which again it's a second odd sentence. एक हम लोग कर चुके हैं, so that's the second question which we are getting into. Okay, let's start. The care with which philosophers examine argument for and against forms of biotechnology makes this an excellent primer on formulating and assessing moral arguments. So they are talking about something on biotechnology, and what they are talking about कि जिस तरीके से जो philosophers हैं, my God, with which philosophers examine arguments for and against बायोटेक्नोलॉजी के फॉर में और बायोटेक्नोलॉजी के अगेंस्ट में. कौन? फिलोसफर्स. ठीक है. मेक्स दिस एन एक्सीलेंट प्राइमर ऑन फॉर्मुलेटिंग एंड असेसिंग मॉरल आर्ग्यूमेंट्स. इस बेस पे हम बड़ी अच्छे तरीके से मॉरल आर्ग्यूमेंट्स बना सकते हैं. फिलोसफर्स हेल्प करेंगे साइंस के आर्गुमेंट बनाने के लिए, साइंस फील्ड रिलेटेड आर्गुमेंट बनाने के लिए ऑन मॉरल ग्राउंड्स. व्हाट अ लाइन. सेकंड, although most people find at least some form of genetic engineering. Wow. Okay. Most people find at least some form of genetic engineering disquieting. It is not easy to articulate why. So बोल रहा है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि कुछ फॉर्म ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग को कुछ खास नहीं समझते हैं. Disquieting. It's not easy to understand why. What is wrong with re-engineering our nature? हमारे नेचर को री-इंजीनियरिंग करने का क्या, इससे गलत क्या है? Okay. Breakthroughs in genetics, okay, present us with the promise that we'll soon be able to prevent a host of debilitating disease, and the predicament that our new found genetic knowledge may enable us to enhance the genetic traits. वो बोल रहा है अगर जेनेटिक्स के अंदर ब्रेक थ्रू है, इससे हम अपनी डिजीज को संभाल सकते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग कर सकते हैं. To grapple with the ethics of enhancement, we need to confront questions that verge on theology, which is why modern philosophers and political theorists tend to shrink from them. वो बोल रहा है हम लोग एनहांसमेंट की बात कर रहे हैं. एनहांसमेंट इन व्हाट सेंस? अगर हम लोग डिजीज को कंट्रोल कर लें, अगर हम प्रिडिक्ट कर लें हमारे साथ क्या हो सकता है, हमारा जेनेटिक मेकअप का हम लोग पूरा अंडरस्टैंड कर लें, सो व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एनहांसिंग अवर लाइफ, राइट? One argument is that drive for human perfection through genetics is objectionable as it represents a bid for mastery that fails to appreciate the gift of human power and achievements. Fine. So, second option or a second sentence is talking about genetic engineering. Third again is talking about genetics. Fifth again is talking about genetics. Now the problem is between first and fourth. Now if you talk about first and fourth, we are talking about this ethics of enhancement which is related to genetics, and here we are talking about biotechnology, a very broad option. Genetics and biotechnology. Biotechnology बहुत broad option है, genetics might be one part of it, right? So that's why first option is eliminated. ठीक है. And in second thing is when we are talking about first option, इसके अंदर it's again a broad option in terms of examining the arguments. What argument we are talking about? So second, third, and fourth and fifth, they are giving the argument of enhancement. First is not even stating that. So that's why first option is eliminated. Okay, let's see. The US has long maintained
that the northwest passage is an international strait. So US क्या बोल रहा है भैया, ये जो नॉर्थवेस्ट पैसेज की बात कर रहे हो ये इंटरनेशनल स्ट्रेट through which its commercial and military vessels have the right to pass without seeking Canada permission. So यहां पर एक बात आ रही है, यूएस की बात, कनाडा की बात, कनाडा से परमिशन लेने की बात, और किसके अंदर, नॉर्थ वेस्ट पैसेज. फाइन, ठीक है. Canada, which officially acquired the group of islands forming the Northwest Passage in 1880, claims sovereignty over all the shipping routes through the passage. So, first of all, Canada बोल रहा है इसके ऊपर किसी का हक नहीं है. यूएस तो बाद में आया. So again, बात कर लेते हैं हम लोग इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन, एक्सटेंशन एंड कंक्लूजन. डेफिनेटली यूएस बाद में आएगा. सो फर्स्ट मेरा इंट्रो तो नहीं होगा, बिकॉज नॉर्थ वेस्ट पैसेज और कनाडा की परमिशन की बात हो रही है भैया. कनाडा की परमिशन की बात तो तभी होगी ना जब कनाडा बोलेगा वो मेरा है. सो वो सेकंड में बोला हुआ है. थर्ड देखते हैं, द डिस्प्यूट. oh my god, they are talking about dispute. Definitely third won't be my intro. Dispute तब आएगा जब नॉर्थ वेस्ट पैसेज की बात होगी. So dispute could be transitory. However, as scientists speculate that the entire Arctic Ocean will soon be ice free in summer, so ship owner will not have to ask for permission to sail through any of the northeast passage routes. So we are talking about routes. Fourth, the US and Canada have never legally settled the question of access throughout the passage, but have an agreement whereby the US need to seek Canada consent for any transit. So my fourth also won't be my introduction. So my introductory line is 2. They are talking about Canada, which officially acquired the group of islands forming the Northwest Passage in 1880, setting the context of the passage, claims sovereignty over all the shipping routes throughout the passage. Now, डिस्प्यूट दे रखा है, यूएस कनाडा की बात हो रखी है. पहले मुझे यूएस को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. यहां पर डिस्प्यूट की बात हो रखी है, यहां पर यूएस एंड कनाडा की बात हो रखी है, तो पहले यूएस को इंट्रोड्यूस करूंगा. और वो इंट्रोड्यूस किससे होगा, नंबर 1 से. सो इट इज एक्सप्लेनिंग इट फर्दर कि भैया यूएस क्या बोलता है, ये इंटरनेशनल स्ट्रेट है, इस पे किसी की परमिशन नहीं होनी चाहिए. अब 2-1 के बाद क्या आएगा, 4 या 3. 2-1 के बाद आएगा 4 या 3. लेट्स सी. अब वो क्या बोल रहा है, द यूएस एंड कनाडा. अब यहां बोल रहा है कि कनाडा की परमिशन नहीं चाहिए. अब यहां वो बोल रहा है इन्होंने अपना ये जो यूएस कनाडा नेवर लीगली सेटल्ड द क्वेश्चन ऑफ एक्सेस थ्रू द पैसेज, बट दे हैव एन एग्रीमेंट वेयर बाय द यूएस नीड टू सीक कनाडा एक्सेंट फॉर एनी ट्रांजिट. उन्हें करना पड़ेगा बिकॉज यहां पर कनाडा की परमिशन की बात कर रही है. और लास्ट में साइंटिस्ट क्या बोल रहे हैं, भैया एक बार आप ये आइस फ्री समर होने दो, किसी की परमिशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. सो 2, 1, 4, 3 is the sequence for this particular parajumble, right? So this is how you need to solve. So I'll just quickly get into, मैं फटाफट बता देता हूं, +3, -0 and all. So this +3, ठीक है, as I said may go wrong, ठीक है, but negative marking नहीं होगी, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है. Again I would say +3 and +3 +6 may go wrong, ठीक है. +6 इन्वेंशन इज ओके, छोड़ सकते हैं इसको. अगेन ये बिल्कुल हो सकता था तुम्हारा +9, डेफिनेटली हो सकता था +12 एंड लास्ट ही राइट 15. सो आउट ऑफ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट 5 क्वेश्चंस नेट करेक्ट आउट ऑफ 8. 5 questions net correct out of 8. Your job is done as far as verbal ability is concerned in the last 12-13 minutes, right? So this is what you need to do as far as अगर मैं CAT 2021 की बात करूं. With this, me Prashant signing off for the today's session. Please do share your comments in the comment section below or after when you have saw the video. Please do watch these videos because these videos are really important for you guys as far as preparing for CAT is concerned, and we'll come up with many more videos on all the sections. You might be getting videos on logic, reasoning, quantitative aptitude. We have now started sharing various quizzes as well. So keep watching and stay tuned with Ekoching. Thank you.